So with this today, I'm going to speak something about Meshhshringi, which is a most widely used drug nowadays for the most common what do you call the lifestyle disorder, that is diabetes. So this is one of the major ingredient of many of the diabetic preparations that are being sold in the market right now. So that is Meshhshringi. So the most commonest botanical source of this, which we find, is Gymnema sylvestre. So now we will see whether why this Meshhshringi is considered as a Gymnema sylvestre, and why what other drugs can be taken with the names of the Gymnema sylvestre, and why we have to take this. So this is only a small description. So before proceeding, this is as we are from the TTD, and we are all being blessed by the Lord Venkateshwara. So our prayers to Lord Venkateshwara and Padmavati Devi. Now, before going into the Meshhshringi and its controversies, first I will give you the a small references of where it has been mentioned in the various samhitas, and then what is the why there is had been a very large controversy. So that we will just understand first, and then we can proceed with why what drugs can be taken with the Meshhshringi. So first of all, we hear this Meshhshringi we generally come across in the Valli Panchmulas, where we can see along with the other drugs Meshhshringi or Ajashringi is mentioned. So this Ajashringi is equated with Meshhshringi in some context, and with some other in some other context it is being equated with some other drugs. So we will see the references along with Meshhshringi. We also see the references of the Ajashringi as simultaneously, and also the some of the other controversial synonyms like the Vrishchikali and Vishanika, like that, where the various other synonyms also come into this. So which we will see one by one. So from Charak Samhita, we can see that Meshhshringi, it is mentioned in the Jvara Chikitsa in the Agurvadi Tailam. In the Agurvadi Tailam, it is mentioned for the Shita Jvara. And then in the Rasayana Pada of it, Ajashringi is mentioned, which is said to be consumed in the form of Swarasa. Okay, and it will have the effects of the Rasayana. And Ajashringi Kalka is indicated for the Virechana. In Charak Samhita and most of the preparations of Virechana Kalpas, we can see this Ajashringi. Even though Ajashringi or Meshhshringi is not in the Shadvirechana Shatastritriya Dravyas, we can see that almost like it is mentioned like the Danti and Dravanti Kalpas. We can see the Ajashringi and Ajaganda Kalpas, which can be seen in the Charak Samhita, which causes a very good Virechana. That's Sukha Virechana Kari Dravyas. So these are the few references which are seen from the Charaka Samhita, that is from the Charaka Chikitsa Sana, if you see, it is in the Agurvadi Taila, you can see this. Then coming to the Sushruta Samhita, Meshhshringi is referred in many contexts in the Sushruta Samhita, whereas in the Charak Samhita we find only a few references of Meshhshringi or Rajashringi, but in Sushruta Samhita we find a few references of Meshhshringi, where in most of the time Dalhana has taken Meshhshringi as Karkatashringi, and he has equated it with the Karkatashringi. And in some instances, it can also be seen that it is Meshhshringa and Karkatashringa, and not as a Shringi. So there is some difference whether it is Shunga, Shungi or Shunga. So Shungi is a it indicates a different meaning, and the Shunga it indicates a different meaning. And it is also said in some context that Shunga, as a Meshhshringa, is like a Putranjiva tree, and it is like a big tree. And in Varunadigana of Sushruta Samhita, it is mentioned that where in all the plants, big plants are mentioned, even Meshhshringi is mentioned. So where it indicates that there is some controversy that it is a very big plant. So big plant or a tree, that should be like a big plant or a tree.
And in some context, Dalhan has also mentioned that the synonyms of Ajastringi are Chagala, Vishanika, Uttamarani, and Mendika in Varnadigana. So these are all the a few things which created a controversy in the identification of this Meshhshringi. Then Meshhshringi is also means cited as Ingudi Beda in some context of by the Dalhana, and it is mentioned to be as the Putranjiva Akruti Vriksha. Putranjiva Akara Vriksha. So Putranjiva is a big tree, as we all know. So it also looks similar to that of a Putranjiva tree. Okay. Then Ajastringi is also one of the drugs which is mentioned for the Samshodhana Varti and is also mentioned in the Valli Panchamala. And there are various contexts where we can. हेलो, वो वक्ता का भी फोटो नहीं आ रही है, उनका आ नहीं रहा, उन्होंने लगा नहीं रहा। अच्छा, वो ऑफ कर रखा होगा। Hello? Sir, please proceed. Okay. So these are the references from the Sushruta Samhita where we can see that Meshhshringi Meshhshringa is mentioned as a Karkata Shringa and by the Dalhana. And you can see the Varunadi Kana where we can see the major big plants. Even Meshhshringa is also one of the plants which is included in that. Then in Ashtanga Hridaya also there are a few references of Ajastringi which are commented with the synonyms of Vishalya, Vishalakya, Vishagni and Uttamarani. And Nandi is also mentioned, which is also referred as a Meshhshringi in some of the contexts of the Ayurveda Rasayana. And Meshhshringi, the word is there is one more plant which is associated with the Vishadravyas. Even the Meshhshringi is mentioned is one of the Vishadravya, but that seems to be different from what we see for the regular Meshhshringi or Ajastringi. And from the Nigandus, we find a few of the synonyms which are of various importance, like Ajastringi, Basta Shringi. Basta is something again related with Aja or the goat, and Shringa. Then Vishanika, Payaphala, which because the fruits release the latex, that's why it is called as a Payaphala, or which contains the latex. And Pushpakshira, so where even the flowers will have the Kshiram. Then Chagashringi, these are all related with the Chaga, Aja, Basta. These all indicate that they are that appearance of the fruits or any of the part will be like that of the Shringa. So Mesha Vishanika, Tikta Dugda, because the bitter milk will be there, bitter latex we can see. And these are indicated as a Shringi or Meshhshringi, they are indicated for the as the Chakshusha or the Akshi Bhaishaja, or which is good for the eyes. And in Dhanvantara and Nigantu, we can see two varieties of it. Ajastringi, one he has mentioned it as two types. First one is the Ajastringi with synonyms of Meshhshringi and Sarpadamshra and Vartika. Sarpadamshra because it is also useful for the snake poison, and Vartika because it twines, it is called as Vartika. And then the other one is the Dakshinavarta, which rotates only in the right direction, and it is called as a Vrishtikalya Vishanika. And he has also mentioned in Meshhshringi in the Vishadravya. And even in the Nigantu Shesha, we can find a few references. Meshhshringyam, Ajastringi, Vartika, Sarpadamshika, where Mesha Syava Shringasya, Meshhshringi, like the fruits will be like similar to that of the horns of a goat or sheep, like that. That's why it is called as a Meshhshringa. So this has been mentioned in the Nigantu Shesha. Like we can see, this is a one of the tree which is also a controversy for this. Now I just represented this. This is Jollycondron falcata.
which is a small or a medium-sized tree with a horn-like fruits, which are similar to the horns of a sheep. And there are a few references that few of them have commented that the fruits of Gymnema sylvester, these are the right one, left ones, they are the fruits of the Gymnema sylvester, which resemble the udder of a goat. So it resembles the udder of a goat with two fruits hanging. So in a similar fashion, it will be there. So it is also considered as a one of the means is an indication for this Meshhshringi. Then even in Nigantu Shesha, we can see that Dakshinavarta, whichever is there, it is called as a Vishtikali or Vishanika because it points only in the right direction and not in the left direction. And we can see from the various Nigantus, Bhaprakash Nigantu, we can see that it is basically the Siktara Sapradhana Dravya and is useful for Kasa Swasa and Vrana Shlesh Makshi Shulanut. So most of the indications that are given for this Meshhshringi are based upon the Akshi or eye disorders. It is mainly indicated. And the phala, the fruits of this Meshhshringi are specifically indicated for Kushta and Meha or Prameha. The fruits of it are indicated. And in the Dvayardhaka Varga, it is given that Ajashringi is the synonym given for Meshhshringi as well as Karkatashringi. And in Rajanigantu, also you can see that Ajashringi and Meshhshringi are not separated and they are not mentioned in one. Ajashringi, Meshhshringi, Vartika, Sarpadamshika, Chakshusha, Tikta Dugdha, Putrashreni, Vishanika. So it is also mentioned in this for the Kushta and Shofa, Shula, etc. Disorders it is mentioned. And Ajashringi Phala is both Ajashringi as a whole and Ajashringi Phala specifically have been indicated in many of the conditions. And in Siddha Mantra, there is a Abhivriksha which is equated with the Meshhshringi and it is mentioned in the Kapha Pittagna Dravya. Then if you see the Monier-Williams dictionary also, there is a few references of Meshhshringi which is equated with the Gymnema sylvester and Ajashringi with the, actually here it is equated with Odina Odier, which is Lania coromandalica nowadays, but it doesn't find much of the importance what I see. Then to sum up, in Ajashringi, in Charaka, Ajashringi is mentioned as a Virechana Dravya. Jaganda, Ajashringi are similar and they are mentioned similar to that of the Tanti and Dravanti. And Ajashringi and Vishanika are told to be in the same context. So maybe the Ajashringi and Vishanika will be like two different Dravyas. And Chakrapani told in some context as Ajashringi as Vishanika, but as per P.V. Sharma ji, it is denied and he told that both may be a separate dravya. Then from the Sushruta, Ajashringi told along with the Ajagandha and in Vatika Shodha, Samshodhanavarti and Varnadigana, Palli Panchamula and Virechana Dravya. Many references are there. And Meshhshringi, Ajashringi are told in the Varunadigana and Meshhshringi and Vrishtikali are told in the same context. So with this, we can say that there are three different dravyas, Meshhshringi, Ajashringi and Vrishtikali. And Ajashringi as one of the Valli Panchamula dravyas. So in Charaka, we can see Vishanika, which is in the Molini dravya, and Shrira Daurgandhya Nashana, wherein the milk which is having a Daurgandhya can be treated with this Vishanika dravya. Then in Sushruta, we can see Vishanika Mula in the Adho Bhaghara dravya. So as we have got a small controversy about the Vrishtikali and Vishanika. So I have included even this Vishanika and Vrishtikali in this. So and Chakrapani commented this Vishanika as a Avartani, and Dalhana commented Vishanika as a Meshhshringi or Avartanika, and Meshhshringi as
Vishanika, Kagala Vishanika, Uttamarni, and Medica are the synonyms given for the Meshhshringi by the Dalhana. And Meshhshringi in Salasaradgana, the Spuk and the Pushpa of the Meshhshringi are used. And Vishanika is also told to be as a Mulini Ganadravya, which is a small plant or a shrub or a shrikar. So from this we can see that Vishanika, Karkatshringi are different from each other, and Ajashringi and Vishanika are told in the same context. So Ajashringi and Vishanika are also different. So so as per P.V. Sharma ji, it is said that Vishanika and Uttamarni are one and the same plants, and they are considered to be as a Pergularia damia. So Brushikali, which is separately mentioned by the Charaka in Apasmara, Pandu, Udara, Shodha, etc. And Sushuta has mentioned this as a Vidarigandha Gana, Arkadigana, Vata Samshamana Varga, and Tikta Varga. And in Ashtanga Hridaya, Sanya Shodhana, and Mahapaishakya we have used the references for that. Please unmute all. Okay. It is requested to all, please unmute. Mute, please mute. Please mute. There are a few references where Vishtikali is equated with the Uttamarni. So with this, there are a few plants which have come into controversy of this. So we have a very different various names which are being confused, getting confused with the Meshhshringi. So to rule out, there are plants. There are a few plants which are described in our text. So I have taken a few of this. So right from the first one is the Gymnema sylvestre, which is the first at the primary one, which is being used extensively with the name of the Meshhshringi in most of the contexts in our Ayurveda. And so this is a plant which belongs to family Apocynaceae. It is a small, it's a creeper, and it has a young branchlets which will be pubescent, which have a very fine hair. And the specific character of it is both glabrous on both the sides, but on the veins you can find the hairy structures present on it. So that is a specific thing for the Gymnema sylvestre. And the spines or the flowers are very much shorter than the leaves, and usually the flowers will be greenish white in color, and we can see the follicles which are lanceolate or long and lance shaped. They are glabrous, and beak will be like very acuminate beak will be there, as we have seen it earlier. So this is the appearance of the fruit of it. Then the seeds will be ovate, and once they bake, because it's a capsule, it will break open, and it will release a comma-shaped white silky hair will be there attached to this, as it belongs to Apocynaceae member, which will be helpful for the dispersal of the seed and for the propagation. And then coming to the other drug which is also being used, it is Pergularia damia, or we can the other name of it is Damia extensa, or the earlier name was the Damia extensa. Now it is Pergularia damia, which also belongs to family Apocynaceae. It is a perennial twining herb. The juice of it, it releases a milky juice, and this leaf shape will be a little bit different, and it is corded with an acuminate tip, and a little bit suborbicular leaves will be present in this. And the flowers will be like greenish yellow or the dull white color flowers will be seen there, and the follicles are lanceolate shaped, and they are like beaked. Beaked means a small tip appearance, and it is echinate or which contains a lot of spines on it.
and you can see the latex, and latex will be whitish and a little bit creamish white in color, and so this is one of the other drug which is used as one of the source for the Meshhshringi or Ajashringi. Then we have the other plant which is having an appearance of the fruit of it, which is having an appearance of a very big horn, or which is similar to that of a horn of a goat. So that is Dolichondron falcata. It belongs to family Bignoniaceae. The tree, it is a very big tree. As Dalhana told, it is a tree. Ajashringa is a tree. So this can be equated with that of Ajashringa and the Ajashringi. So this is a tree, and it is about 15 to 20 feet high, and the leaves of it are 2 to 6 inches long and 3 to 6 ovate and oval in shape. And the flowers are white and whitish or creamish white in color, as you can see in enlarged view. And the fruits of it are very big and follicle-like. Okay, so and they resemble that of a horn. So this can be considered as a Meshhshringa and the Meshhshringi, as it is a big tree. Otherwise, the other two plants, which are Perglaria damia and the Gymnoma sylvestre, which are the twinners, can be considered as a Meshhshringi. Then this for the Meshhshringa, there are even this Pistacia canensis, that is Pistacia intergerima, which is a considered as a Karkata Shringi. It belongs to family Anacardiaceae. So this can also be taken. This is also taken as by some as a what do you call Meshhshringi. But in this, the actual fruits are not there, but galls will be similar to that of the horn. The galls which are present in this. The leaflets of this plant are opposite, and it's also a big tree. It is also a controversy for the Meshhshringa. Then Vishanika or Vishtikali, there are two other plants which are seen with the names of Meshhshringi. So for this, we have Heliotropium indicum, which belongs to family Boraginaceae, and it's an annual plant. It's a small annual plant which is about 15 to 50 centimeters, and the flowering spike which is present, it will be like a helicoid type of appearance will be there with the flowers, and it contains a very small flower. The roots or the of this plant can be used as a medicine. And then various other some plants are also included, which are considered to be as this. But this Sasuria gossipiflora is also mentioned, but this is considered as a aja. Aja is also given as one of the synonym for the Meshhshringi, but it's not exactly. But aja is also a separate dravya. So maybe this aja is one of the controversies for this Sasuria gossipiflora, which is a Himalayan plant, and most of the times it will be seen in the Himalayan region. Then Tragea involucrata, this is also considered as a Visticoli or Vishanika, because all these plants, they cause a lot of itching on the body whenever they are touched, and they cause much itching and pain similar to that of a poison scorpion sting. So that's why they are considered as some of the Visticoli or Vistica-like plants. And this is a Taiga involucrata, which is belongs to family Euphorbiaceae, and it's a slender twining herb with a stinging hair. Both the leaves are cordate, and it will be hispidous. Mainly, it contains a lot of hairs on it, which are very poisonous, or which can cause a lot of irritation or the itching. Then some other plants like Artica dioica, which belongs to family Articaceae, which also causes a rash-like appearance when it is touched or when it gets into contact with the skin. These are all considered for this. And Gerardia heterophylla, this is also this, considered as one of the most scorpion-like paining plant when it is touched.
So these are also included in relation with the Vrishchikali. So from this, if you want to conclude, or if you want to get to the conclusion, like which plant can be equated to the which of the synonym, then this can be one of the a little bit reference from the various texts and also from my side. So Ajashrungi uh, or Ajashrungi or Meshhshringi, it can be equated. Uh, sorry, there's a small mistake here. Ajashrungi can be equated with Pergularia demia, and Meshhshringi can be is equated with the Gymnema sylvester, and Uttamarni or Vishanika can also be equated with the Pergularia demia. As Karkatashringi is Pistachia intergerima, and Meshhshrunga can be equated with the Dolichondron falcata, as it is a big plant. The other ones like Aja is Sasuria, Gossipiflora, and Vrishchika Patri or Trachea involucrata, Vrishchikaya Shaka of the Attica dioica, and Vrishchikali with the Heliotropium indicum. So we have a few clinical data or the few trials which were done with this Gymnema and the Pergularia, because we get only these two plants here. And Dolichondron falcata is a rare one, and the other plants which we don't get in southern parts of India, except for the Trachea involucrata and Heliotropium. So we have for identification of the clinical uses of Ajashrungi and Meshhshringi, we have done a few clinical trials here with respect to mainly diabetes mellitus. And we have also found that both of these plants are equivalently effective with respect to the management of the diabetes and related conditions, and obesity also a little bit. It can be also useful for this obesity. But Gymnema sylvester and Pergularia are equivalently effective, and a little bit to say Pergularia demia, if it is given, it is not causing any type of disturbances or any weakness in the patients of this, or there is no means hypoglycemia or anything seen in with the Pergularia demia. Some we have also seen that Pergularia demia, which is a apocynacein member, and there is a lot of latex. Maybe it can cause some side effects, but to our surprise, there was no side effects or any other adverse reactions that were seen with the Pergularia demia or the Gymnema sylvester. But it was like in a short study. So a major study with a large number of patients will be more useful, I think. So in one set of conditions, it can be given. But as mentioned in the Charaka, as Pergularia demia or Ajashrungi or Meshhshringi is considered as a Virachandravya. Of course, we are not given the roots of it or anything. We have given only the whole aerial parts of the plants. So we did not find any type of that Virichana effect in this. It was like normal thing for everyone, for all the patients for who we have given, and they were found to be effective in controlling the diabetic mellitus. So with this short thing, I'd like to conclude this, and I'd like to say that Meshhshringi and Ajashrungi can be equally useful for this when it comes to this. But as when it is considered as a Meshhshringi, but when it is considered as a Meshhshringa, we can use as a Dolichondron falcata. But in most of the cases, wherever we are finding now, wherever we are finding Meshhshringi as a reference from the text, I suggest to use either Gymnema sylvester or the Pergularia demia. So thank you very much for giving me the opportunity, and thank you for patient hearing. Sir, thank you very much for your nice presentation. Now the forum is open for the discussion. Here we have Mohanlal Jaiswal sir. Sir, I am requesting you kindly give your opinion. मीना जी धन्यवाद। पहले आप और जितने हमारे ऑडियंस हैं
उनसे पूछ लीजिए उनकी और क्या शंकाएं हैं, वो लोग क्या विचार रखेंगे, फिर मैं बता दूंगा। जी सर, धन्यवाद। जी जी जी। गिरिधर वेदांतम सर। Namaste to all. Yes. So, pranam to all, and this Dr. Pawan Kumar has elaborately shown what are the differences in classical and research also what he has done at the place. And actually, when we see in the classical, there is we get some different meanings from the same word has been used. Sorry for that. Sorry, there is background sound. So there is, when we see the references also, same words are used for different drugs, and there is a confusion, and the problem is coming is that diabetes. The references, what we see, the leaf which we are using is not mentioned in the class. So diabetes, Meshhshringi has become one of the drug of choice. Means many of the formulations are available in the market of this Gymnema sylvester, and people are selling it. But we are not having very good references for that for the Madhumeha earlier. But clinically, it has shown, and experimental clinical results have shown that the Gymnema sylvester has shown very good results. It has become. So now, what I feel is when we are having the clinical evidences, so this shows that this is a revolution. Means people have come out with the clinical evidences, and Gymnema has been used. So names there are difference because we cannot, because when the botanical description which is given is matching to many plants, as we have seen from Heliotropium to many other plants. Avartani, when we are telling there is a so it makes confusion. One is the Sambradaya, means the Guru Shishya Parampara, what plant has been mentioned for that has to confirm that drug, but there is a missing in it, and that's why Meshhshringi, Arajashringi, both are having similarity botanically. Our plant is there, but Fergularia, as they have done research until now, I am also feeling that Meshhshringi is this, but uh, Dr. Pawan is telling that even this also, what I call Fergularia, is also have shown the similar result. So we have to do further research on that because whatever plant has been described, the earlier Charaka Samhita or Susra Samhita, what they are mentioning for the Virechana purpose, or Pitta, Rasa and all, they are the for Meshhshringi or Rajashringi, but now we are using for a different purpose. So what my feeling is we have to do further more research on whether this drug attributing is a different part. Okay, we are using critically and we'll go on because this is called addition to the Ayurveda to come with different drugs which are helpful for Ayurveda for people which we are using. And Dolicandre, many people have not done. Meshhshringi, we are telling, but not much work has been done and has not been brought. Karkarshringi or Meshhshringi, both are different actually because of structure and all. Uh, but here diabetes has not been prominently mentioned in classes, but we are using. This is one of the contributions which has brought in the latter period and which is helping what I feel clinically what is useful is very important and further study should be done for attributing one drug or separating it because there is still what I feel is there is a not much clear lines if you take literature to separate these Meshhshringi, Rajashringi, Vishanika, etc. Even in Hyderabad, maybe Dr. Sarutarani is also there. She also took on this and some pieces work they have taken. I feel these things will come with some more light on the subject. Thank you for providing me opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your inputs.
Now I am requesting There, R.K. I Tiwari, sir. just want to say something. Hello. Yes, yes, sir. Yes, Uh, please. Actually, when it comes to the references of Gymnema or Perglaria, Damia, or any other Meshhshringi Dravyas to be in the Prameha or in Madhumeha, we only get reference from Bhava-Prakasha. Bhava-Prakasha, there is a reference for Meshhshringi where it is considered as Pushta Meha Kapha Pranut. So based upon that, there are means like a few references of it in the uh, prameha or the diabetes. But actually speaking, just as Girdhar sir said, there is no like prominent reference for this Meshhshringi to be used in the uh, diabetes. But nowadays, whatever the research that has been given and the action what we see when it goes into the mouth, it causes a sensation loss for the diabetes or sugar for the sugars or the carbohydrates. So that itself is giving a lot of prominence for them to go for the various researches. So even when one of my students has started this work, so we have also done the same thing. So Perglaria Damia was not at all mentioned. Even now, if you see the references for the anti-diabetic property of Perglaria Damia, we get very few references of it. But Gymnema sylvester is now widely used as one of the anti-diabetic medication, and it has also got sometimes a mixed type of result. Some patients respond very well for the Gymnema powder, Gymnema leaf powder, but some patients they don't find much of the clinical application in that. But there are some people who respond very fast and they are going into even a stage of the hypoglycemia when it is taken in a higher quantity. So what we have observed, because we get some of the single drugs in our hospital, and we also tried this. So they are having a well-maintained insulin levels when we diabetes for this Gymnema was given. So we thought of going with this Demia extensa for the first time. First time means maybe we have not found any differences. So we are trying because in folklore they are using this Demia extensa in some of the areas for the as an anti-diabetic medication. So we have also tried this one, and of course we have got a almost equivalent result with others Gymnema. But we have not tried with the modern anti-diabetic drug. So it will be very useful if we can do it with the modern anti-diabetic medications, and maybe we can contribute some other things from our side or from our Ayurvedic side. What we can say. Even I think Saruparani madam from Hyderabad Ayurvedic College and her students are also working on the same thing. The anti-diabetic properties or some other properties of this Perglaria Damia and the Gymnema sylvester. So, madam can throw some light on this. Again. Okay, sir. Okay, thank you. R.K. Tiwari, sir. Yeah, Dr. Meena, thank you, madam. Am I audible? Yes, yes, sir. Yes. एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा कि मैं आज एक नैमिषारण्य के पास अपने नेटिव प्लेस पे एक गांव में ही हूँ, तो वो दिक्कत तो हो रही थोड़ी बहुत, लेकिन तब भी अगर आवाज आ रही तो बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि पवन सर ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है और आगे बहुत सारा कमेंट्स देने के लिए मोहनलाल सर हैं ही। जहां तक ये जो बात आई है मेषश्रृंगी और मेषशृंग का, यही एक प्रॉब्लम आती है और उसमें बहुत सारी बात हो चुकी है कि डोलिकॉन्ड्रॉन फलकटा हो सकता है वो बिल्कुल मेषशृंग के नाम से और मेषश्रृंगी अलग हो ये, लेकिन सुश्रुत में ज्यादातर वही है और जब उनमें लिखा गया है वो बड़े बड़े सारादि गण और वरुणादि गण में है तो वृक्ष ही होना चाहिए। जहां तक रिसर्चेस की बात है जो इस पे जो चल रहा है अपने जिम्नेमा सिल्वेस्टर पे, इसके एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स का, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जितना क्लेम किया जा रहा है उतना कुछ उसका इफेक्ट है किसी। बेसिकली क्या है कि वो टेस्ट बड्स को पैरालाइज करता है और पर्टिकुलरली ऑफ स्वीट टेस्ट, तो वो जरूर है, उसको हम
लोग बहुत एग्जैजरेटेड उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। स्वीट टेस्ट बड्स को पैरालाइज करने से मात्र ये होता है कि वो स्वीट्स वगैरह लेने के लिए वो डिस्करेज होता है पर्टिकुलर पेशेंट, और उसी की वजह से वो स्वीट्स लेना जब कम कर देता है तो जाके होता है। मैं बहुत बार देखता था कि मेरे स्टूडेंट्स को सबको लेके एक एक चॉकलेट लेकर के जाते थे, उसके बाद वो खाते थे, कहते थे ये तो बिल्कुल टेस्टलेस लग रहा है अब तो केवल उतना ही सा एक्शन है, और बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मेरे समझ से तो नहीं आए हैं क्लिनिकली। हाँ, ये जो आयुर्वेद की परंपरा है, क्या हम लोग की, हाँ, कुछ भी जो हम लोग सुनते आ रहे हैं उसको उसको एक कंपेल करते हुए और उसको वही हम लोग प्रूव करने की कोशिश में लग जाते हैं, बायस्ड होके। रियल रिसर्चेस हम नहीं रखते। वो यहाँ पे मुझे लगता है इसके मामले में सिमिलर थिंग इज विद जम्बू आल्सो। वो भी कषाय रस द्रव्य होने से बहुत ज्यादा एफिकेसी उसकी नहीं लगती है, क्योंकि मधुमेह एक वातज प्रमेह है, और वहाँ पॉजिटिव एजेंट्स वो कहे गए हैं कि तिक्त रस और वो कषाय रस और कषायत्व और रुक्षता मधुमेह के लिए पॉजिटिव एजेंट्स हैं। और ऐसे द्रव्य से जो बात संजनन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ हो, मधुमेह की चिकित्सा करना संभवतः है। और जम्बू द्वीप में रहने वाले चरक आदि को मालूम न होता, ऐसा नहीं। क्योंकि मधुमेह की चिकित्सा बेसिकली वही है कि स्रोतस को शुद्ध करें और सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंचे और तब सुधरे। चलिए, वो अभी तक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है वो, लेकिन वो बहुत सारे लोग उसको नहीं वो कहते हैं। महेश संतर्पण में वो कार्य लिखा है, अधश ऊर्ध्वम तथा अधश मले पनीते, लेकिन फिर भी करते तो यही है कि सब अपतर्पण ही कर रहे हैं ज्यादातर मामलों में। दैट इज नॉट ट्रू। वो बिल्कुल ठीक अप्रोच नहीं है, ये मेरा मानना है। मैं प्रोफेसर आचार्य प्रोफेसर शर्मा जी ने मुझे ही टॉपिक दिया था, मधुमेह को जक्षय में जीवनीय औषधियों का प्रभाव, सदगुरुदेव जी थोड़े ही। तो उन हालात में ये हुआ था कि मैंने पहले तो सोचा ये कैसे होगा, लेकिन वास्तव में देखा तो जो मधुर विपाक द्रव्य थे, जो डायरेक्ट तिक्त रस, वो तिक्त रस हो लेकिन उनका विपाक मधुर हो, उनका अल्टीमेट रिजल्ट एनाबोलिक हो, वो ज्यादा अच्छे। मेषशृंगी या जिनवा का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं लगता कि ये मधुर विपाक का हो। तो मधुमेह में इसकी इफिकेसी बहुत अच्छी होना वो नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आवरणजन्य मधुमेह जो भी है, जो कृच्च साध्य वाला, वो वहाँ थोड़ा पार्शियल इफेक्ट हो सकता है, तो उसके कुछ केसेस में, स्पोरेडिक केसेस में वो हो। बाकी तो ना जामुन का उतना ज्यादा रिजल्ट दिखाई देता है, ना उतना कंसिस्टेंसी भी नहीं है अप्रोच की। बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पे बात की जा सकती है। आज तो मैं इतना ही बात करना चाहूंगा। मैं बहुत रिमोट एरिया में हूँ। बहुत अच्छा रहा कि मेरी आवाज अभी तक आ रही है, और बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आपको परेशान करी, कुछ दिक्कत है, कोई फैमिली फंक्शन में ही हूँ मैं, तो मैं बाहर निकल आया हूँ। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद मैडम। सर। और धन्यवाद सर। बाकी सब मोहनलाल सर देख लेंगे, वो जो कुछ भी जी होगा। जी जी जी, सर। धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और किसी को अपना इनपुट्स देना है तो मोस्ट वेलकम। रश्मि मैडम। हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्कार सभी को। आ, मैडम सर ने तो बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया है और बहुत अच्छा बताया है। इसमें हम लोग चाहे स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, मेष श्रृंगी, अज श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी, सभी इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी रह रही थी। और जहां तक मुझे लग रहा है सर ने बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को, कंक्लूजन वाला पार्ट भी बता दिया, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या चीज क्या होना चाहिए। और थैंक यू। मैं सर को बधाई देती हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और बाकी बचता थैंक है यू मैडम। कि थैंक यू। परगुलेरिया और मेष श्रृंगी के बीच में वो क्लिनिकल जो भी एस्पेक्ट हैं, वो तो देखने वाली बात ही है कि कौन सा बेटर है। बट एज अ कंट्रोवर्शियल ड्रग के रूप में सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू मैडम। थैंक यू। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ जी जी कि सर जी। हम लोग जब क्लिनिकल ट्रायल, हमें हमारे बच्चों को जब क्लिनिकल ट्रायल में ये दिया था, तो हम्म, हमने एक ये भी टेस्ट किया था कि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि जेमिनीमा सेल्वेस्टर
जो देते हैं उसमें मिक्स्ड रिजल्ट आ रहा है, वो तो हमने हमने भी जाना है। तो हमने जब ट्रायल शुरू किया था तो मुझे भी इतना लाइक इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना हम निशामला की को करते हैं, उतना जिमनिमा का पाउडर भी उसके ऊपर भी उतना ये नहीं था। या बट थोड़े केसेस में ऐसा हुआ था कि हम जिम्नोमा सिल्वेस्टर पाउडर दे रहे थे और उसका बहुत अच्छा सा कंट्रोल हो रहा था। तो हमने तब सोचा था कि ओके जिम्नोमा से भी हो रहा है या कुछ करके देखा था। और थोड़े ऐसे एक 1 और 2 केसेस में हम लोग ऐसे भी देखे थे कि पेशेंट को ड्रग दिया और एक आधा घंटा 1 घंटे के बाद और 1-2 आवर्स के बाद फिर वी हैव checked the sugar levels and we were seeing how there was a change. But of course it was not a मैं इसलिए प्रेजेंट नहीं किया हूँ कि वो एक्चुअल परफेक्ट डाटा नहीं था मेरे पास, इसलिए प्रेजेंट नहीं किया हूँ। बट देर वर a few changes in the sugar levels even with both with Gymnema and Perglaria. मे बी उसका अभी एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें कुछ रिजल्ट आ सकता है, या कुछ हम बोल सकते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो ये तो हम लोग थोड़ा किए थे, बट उसका अभी उतना फुल प्रूफ डाटा नहीं है कि मैं कुछ कंक्लूसिवली बता सकूं, इसलिए मैं क्लिनिकल डाटा यहाँ पे नहीं इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो मे बी कुछ सपोर्ट मिलता है तो हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, वही बोलना चाहता हूँ। सर आपने और इसे अदर अदर इंडिकेशंस जो है उस अदर इंडिकेशंस के पे भी अगर हम लोग कुछ स्टडी करते हैं तो तभी जाके हमें मालूम होगा कि एक वो दो ड्रग सिमिलरली यूज कर सकते हैं क्या नहीं, वो तब मालूम होगा। अभी एक ही डिसीज पे काम करके वो करना भी उतना बेहतर नहीं सोचता हूँ मैं तो। जी जी सर। सर आपने इसे ब्लड शुगर ही किया था कि HbA1c भी टेस्ट करवाया था? नहीं, एच बी ए वन सी प्रैक्टिकल वो जो उनका स्टडी में तो एच बी ए वन सी भी कर चुके हैं मैडम। हाँ हाँ। मगर मैं जो बोल रहा था जैसा कि हम डायबिटीज का एंटी डायबिटिक मेडिकेशन देते हैं फिर बाद में कितना कंट्रोल हुआ, वो टेस्ट के लिए तो हम एच बी ए वन सी नहीं ले सकते ना, सिर्फ वो फास्टिंग और यही पोस्ट लंच ब्लड शुगर ले सकते हैं, वही चेक किए थे कितना नहीं चेंजेस आ रहा है, वो देने के बाद कितना चेंजेस आ रहा है वही चेक कर रहे थे। ओके ओके सर। नहीं बट वो भी जनरली। कंक्लूसिव डाटा कुछ भी नहीं आया है, इसलिए हम लोग ओके नहीं बता रहे हैं कुछ। ओके 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 सर। ओके ठीक। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ हाँ शिवानी मैडम बोलिए। नमस्ते मैम। मैम मैं कुछ ऐसी सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर एंड सभी को प्रणाम। मैम बस मैं थोड़ा सा ये रखना चाह रही थी कि सर ने कंक्लूजन में जैसे सर ने आपने बताया कि वृश्चिकाली से हम लेते हैं, एक तो परगुलेरिया ले रहे हैं, और सर लास्ट में आपने फिर हेलियोट्रोपिकम को भी वृश्चिकाली ले लिया। हम्म। तो हाँ। इस मेरा सर से थोड़ा यही अनुरोध था कि सर जैसे हेलियोट्रोपिकम को तो हम हस्ती शुंडी के नाम पे लेते हैं उस ड्रग को, तो उसको किस बेसिस पे हमने वृश्चिकाली की तरह ले लिया है? उसमें लेटेक्स भी नहीं होता, उस तरह का फ्रूट्स भी नहीं आता, तो उसका बेसिस क्या था सर उसको उसमें लेने का, वृश्चिकाली के नाम पे लेने का? एक्चुअली उसका जो वो स्कॉर्पियन स्टिंग जो रहता है, स्कॉर्पियन का टेल टेल और उसका स्टिंग जो रहता है उसका मीन्स सिमिलैरिटी विद दिस ऑफ द व्हाट यू कॉल द फ्लावर इनफ्लोरेसेंस जो रहता है उसका इन्फ्लोरेसेंस। सिमिलैरिटी देख के वो दे रहे थे। But actually, it is also a means. Actually, here I should not talk about Vishikali and Vishanika because the word Vishanika has come, which is equated with the Vishikali. I've just given it, but it is a what you are talking is I think is a different subject. I think what I think is. नो तो सर, उसका हंसी शुंडी जो रहता है उसका अलग ही टॉपिक हो जाएगा शायद, मैं सोचता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा जस्ट आई वांट टू मेंशन कि उसको हम जहां तक कहते हैं उसको हस्ती शुंडी के नाम पे यही ड्रग हम लोग लेते हैं, हेलियोट्रोपिकम हाँ। इंडिका। तो बस मेरा यही था कि उसको नहीं, वाकई आर हस्तशिंडी ले रहे गोइंग हैं, और देते हैं। वृश्चिकाली के नाम से भी बहुत सारे रेफरेंसेस है जी जहाँ जी पे जी हीलियोट्रोपियम ले रहे हैं। जी जी तो जी उसका तो सेपरेट यही हो जाएगा शायद। जी जी जी। और सर दूसरा आई जस्ट वांट टू ऐड कि बहुत सारी स्टडीज हैं जो अच्छी एल्सवेयर या एथनोफार्माकोलॉजी में पब्लिश हुई है, जिसमें कि दे आर mentioned that the drug that is Gymnema sylvestris is having a good effect in diabetes. पाउडर स्टडीज, लीफ पाउडर स्टडीज भी हुई हैं,
और उन्होंने ये क्लेम भी किया है कि यस टाइप 2 डायबिटीज में दे आर हैविंग अ वेरी गुड इफेक्ट्स। तो बहुत सारे पब्लिकेशन सर हैं हमारे पास, और अभी के नहीं 90s के भी हैं, जहाँ पे जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस लीफ को उन्होंने प्रूव किया है एज अ वेरी गुड एंटी डायबिटिक फॉर द टाइप 2 डायबिटीज। तो शायद ये पोटेंशियल ड्रग तो है, बट फर्दर रिसर्चेस आर नीडेड फॉर दिस। Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. There are references, Madam, but when it comes to the madam, clinical aspect, hello, Yes, sir. Yes, sir. sir, mere ख्याल से there are many references. Even I have seen a lot of papers which are published on Gymnema sylvester as an anti-diabetic drug. But when it comes to the practical aspect, and when we sit in the clinic and see the patient, what I feel is like Nishamlaki or any other Srivanga or Shilajit preparations which are given, which give more better result than Gymnema sylvester. What I feel is वो मेरा यानी प्रैक्टिकल यानी मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो बताता है कि जब निशामलकी चूर्ण या कोई और अपना फॉर्मुलेशन जब देते हैं हमारा, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है जिम्नीमा सिल्वेस्टर से। एंड we have even checked with Nishamlaki some time back when Parankusha sir was there. We have tried with in annual experimentation also, and it has shown that it has stimulated insulin levels much better than this Gymnema sylvester. ऐसा इसलिए मैं बोल रहा था ना, Gymnema sylvester is giving a mixed types of result. Like some patients it will work very well, some patients it is not working well. But we need to understand, we need to study the patient completely where we can say that in which type of patients it is working well and which type of patients is not working well. जैसा कि हम standard it will work on diabetes, we cannot say that. Yes. That's what is my opinion exactly. Yes. so may I speak, sir? Yes, sir. Yeah. We have also done one study for drug interaction with metformin. One group is Meshhshringi with Gymnema sylvester, one group is metformin, another is a combination. And we want to study for kinetic data also, but unfortunately, we couldn't get significant difference in the blood sugar levels also. That is what because many studies, even one study earlier also interaction, they have tried with metformin, they also got some change. Even their study shows that this Gymnema has decreased. They have taken extract also, but our study, I don't know why it has come the result, but it showed that there is no significant difference in the blood glucose level. It is a streptozotocin induced referral. I am having a skepticism about whether we have done fault or because drug was given, but the time of administration or what we have given the streptozotocin model is not good or not. I have many doubts on it, but still our study has not shown significant change in the blood glucose levels that have given the Gymnema. That is one what we observed, but I don't feel because many people have done studies, but because I found there are different morphological variations in plants. When we have seen Western Ghats, Gymnema is having some different structure. When we see in our gardens or some places, it is different. Maybe the place where it is growing or the way it grows may also have differences in its action. We have to see that also. Thank you. Okay, thank you, sir. Now I am requesting to Jaiswal sir, Mohanlal Jaiswal sir. Mohanlal Jaiswal sir. हाँ, धन्यवाद। आवाज हमारी आ रही है मीना जी? जी 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 सर। सर्वप्रथम मैं आज के जो प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर पवन जी ने जो बहुत ही अच्छे ढंग से नमस्ते। नमस्कार, बहुत ही
सुंदर ढंग से मेष श्रृंगी, मेष श्रृंग और इसका सारा जो पूरे एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, इसलिए उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और नमस्ते सर, थैंक यू सर। इसमें बहुत ही स्पष्ट है कि मेष श्रृंग और मेष श्रृंगी एक स्त्रीलिंग वाचक है और एक पुल्लिंग वाचक है। तो मेष श्रृंग, जैसा आपने देखा कि सुश्रुत के सालसरादिगण में सारे जो सारवान वृक्ष हैं उन्हीं के साथ जो है मेष श्रृंग, चंदन कुचंदन, वो सारे जो है सारवान वृक्ष ही हैं। और सारवान वृक्ष में श्रृंग भी है, जिस पर की जिसकी आइडेंटिटी बहुत ही अच्छे ढंग से वहां पर दलहन ने बताई दिया है। पुत्रन जीवक सदृश तरु विशेष, पुत्र जीवक, पुत्र जीवक के समान उसका जो तरु विशेष है कह दिया। तो बिल्कुल वाइट श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प होता है, पुत्र जीवक की तरह वो बिल्कुल उसकी आकृति लीप्स मिलती जुलती। तो वो बहुत स्पष्ट है कि मेष श्रृंग से डॉलिकेंड्रम फाल्केटा, जिसके फलियां जो होती हैं वो बिल्कुल मेष श्रृंगवत, बिल्कुल मेष के जैसा मेढा का श्रृंग होता है वैसा ही बिल्कुल मुड़ी हुई होती है। ये हम लोग पूरा सब लोग फील्ड में जो जाते हैं देखते हैं। तो इस पुल्लिंगवाची जो मेष श्रृंग है उससे बिल्कुल निर्विवाद रूप से डॉलिकेंड्रम फाल्केटा लिया जाना चाहिए। और विशेष बात यह है कि वो सुश्रुत के सालसरादिगण के सभी सारवान वृक्ष प्रायः कषाय प्रधान और तिक्त अनुरस वाले द्रव्य हैं। तो मेष श्रृंग से उसको ग्रहण करना बिल्कुल यथोचित है। अब रह गई बात स्त्रीलिंग वाची जो मेष श्रृंगी है, जो कि सुश्रुत सूत्र 39 में आता है मेष श्रृंगी शब्द से। तो उस पर जो है दरअसल दल्हड़ भी देखेंगे तो उस पर दोनों ही टीका किए हैं। कहीं उसको जो है वो मेष श्रृंग लिख दिए हैं और कहीं वहां उसको कर्कट श्रृंगी भी लिख दिए हैं। तो बाद में फिर गुरु जी ने उस पर कंक्लूजन दिया है कि मेष श्रृंगी से जो लता जातीय जो द्रव्य है उसे ग्रहण किया जाना चाहिए। गुणमार प्रसिद्धा इति गृह्यते। तो स्त्रीलिंगवाची मेष श्रृंगी से तो जिम्नोमा सिल्वेस्टर ग्रहण करना चाहिए, जो कि तिक्तरस प्रधान है, जबकि मेष श्रृंग कषाय प्रधान, सारे सारवान द्रव्यों की तरह कषाय तिक्त है, ये तिक्त रस है। दोनों के रसों में ये थोड़ी सी भिन्नता है, इसमें तिक्त रस की प्रधानता है। और इसी दृष्टिकोण से अभी मैंने 5-7 दिन पहले ही द्रव्य गुण के ग्रुप पर लिखा भी था कि इसके वीर्य में भी तरतम भेद है। दोनों जो है एक दोनों का, चूंकि वो तिक्त रस है, वो कषाय तिक्त है, इसलिए तरतम भेद से वीर्य में भी अंतर है वो। और जैसा कि आप देखेंगे कि सुश्रुत ने उत्तर स्थान में इसको शिरोरोग के संबंध में मेष श्रृंग को उल्लिखित किया है। शिरोरोग के प्रसंग में इंगुदी के साथ, या तो इंगुदी की त्वचा दीजिए या मेष श्रृंग की त्वचा का प्रयोग करिए, ये उन्होंने उल्लिखित किया है। या मधु के सार का प्रयोग किया है। तो सब सारवान वृक्ष हैं। तो मेष श्रृंगी से स्पष्टतः जो है जिम्निमा सिल्वेस्टर ग्रहण करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और रह गई बात कि मधुमेह में कार्मुकता की बात है, तो मधुमेह हमारा आयुर्वेद का जो मधुमेह है वो तो ओजो में है, जिसमें ओज का क्षय होता है
और ओज के क्षय में वही वनस्पतियां कार्य करेंगी जो तिक्तरस प्रधान तो हो, चाहे कसारस प्रधान तो हो, लेकिन उनका विपाक मधुर हो, जिससे वो ओज का संपोषण करें। तत्र बृंगड़म तत्र मधुश्च, है ना वो आपका चिकित्सा सूत्र कि स्थूल प्रमेही बलवानी है का कृशस तथैक परिदुर्बलश्च संबृंगणम तत्र कृशश्चकाय संशोधनम दोष बलाधिकस्य। तो दोनों का चिकित्सा सूत्र, दोनों मधुमेहियों का चिकित्सा सूत्र स्पष्ट अलग कर दिया कि एक में बृंगण चिकित्सा करनी है और एक में जो है जो जो ओजो में है उसमें बृंगण चिकित्सा करनी है। और जो आवरण जन्य मधुमेह है उसमें इस तरह के द्रव्य कार्य करेंगे जो तिक्त कसाय रस वाले हैं और तिक्त कटु विपाक वाले हैं, वो तो दूसरा ही एक ग्रुप है। तो इस दृष्टिकोण से हमें आयुर्वेद के मधुमेह को दो ग्रुप में चिकित्सा सूत्र के अनुसार स्थूला प्रमेही और कृषभ प्रमेही के अनुसार बृंगण और संशोधन करना चाहिए। तो अभी तिवारी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको बताया कि बिल्कुल उसका मधुर विभाग होना चाहिए। बहुत ही इंटेंसिव वर्क द्रव्यगुण विभाग का सिंधु विश्वविद्यालय में गुरु जी, ओझा जी, वहां तो सीरीज वाइज जो है मधुमेह पर कार्य हुआ है और वही द्रव्य है जो ओजो में, और जो ओजो में ओज को जो संपूर्ति करेंगे वो निश्चित रूप से मधुर विपाकी द्रव्य ही होंगे, बृंगण द्रव्य ही होंगे। अब इसमें एक कंक्लूजन में वृश्चिकाली की बात आई। अरे तो उस पर दो कंक्लूजन आपने प्रस्तुत किया था, डिमिया एक्सटेंसा और दूसरा जो है हेलियोट्रोपियम इंडिकम, हस्तिशुंडी को और उधर जो है उत्तमारणी को। तो मेरे दृष्टिकोण से वृश्चिकाली से तो डिमिया एक्सटेंसा को ही, उत्तमारणी को ही ग्रहण किया जाना यथोचित है और हस्तिशुंडी को अलग ही रखना चाहिए। इसका विकल्प हस्तिशुंडी उतना उचित नहीं लगता। अब ये देखा जाना चाहिए कि भाई इस पर एक स्टडी का विषय है या सर्वेक्षण का विषय है। वैसे हस्तिशुंडी का प्रयोग जो है आप जानते हैं कि रक्तस्तंभन के लिए, व्रण पूरण के लिए इस रूप में फोकलोर में भी होता है, शास्त्रों में भी होता है। तो वो अलग, इसमें मेरे विचार से वृश्चिकाली का जो प्लांट सोर्स है वो डिमिया एक्सटेंसा ज्यादा उचित प्रतीत होता है। और वृश्चिक पत्री से ट्रेजिया जो है इनवॉल्यूक्राटा जो है वो उन्होंने आपने प्रस्तुत किया, वो ठीक है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अजय श्रृंगी से कर्कट श्रृंगी है। अजा जो है उस पर टीकाकारों को आप देखेंगे तो उन्होंने महौषधि विशेषः, तो महौषधि विशेषण से बिल्कुल यथोचित है कि सासुरिया गाजीपीफोलिया जो उत्तरापथ का द्रव्य है और हम हिमालयन बेल्ट में हम लोगों ने देखा है, वो बिल्कुल अजा से लिया जाना, जैसा आपने सजेस्ट किया है, प्रस्तुत किया है, वो बिल्कुल उचित लगता है शास्त्रीय संदर्भ को देखते हुए, महौषधि विशेष को देखते हुए। अब उसमें एक लास्ट में ये था जो वृश्चिया शाक के बारे में दो जो है आपने स्रोत प्रस्तुत किया है, जिरेडिनिया हेट्रोफिला और अर्टिका डायोका। वस्तुतः मायाराम जी गुरु जी से या हिमाचल में हम लोग जब हिमालयन ट्रैक कई बार किए तो वहां पर जो है डीआर नाग साहब से या वहां के लोकल लोगों से कि क्या ये शाक के रूप में प्रयोग होता है, तो उत्तराखंड में जिरेडिनिया हेट्रोफिला का प्रचुर रूप से शाक के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए यही लगता है कि वृश्चिया शाक जहां उल्लिखित है उससे जिरेडिनिया हेट्रोफिला को ही लिया जाना ज्यादा जो है श्रेष्ठ लगता है। और अर्टिका डायोका जो है वो किस नाम से हमारे यहाँ भी ये शाक वर्ग में स्वस्थ वृत्त विभाग में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में काम हुआ तो जिरेडिनिया हेट्रोफिला को ही लिया गया और वो हिमाचल का ही एक बच्चा था, उन्होंने काम किया, उन्होंने ही लिया और उस पर जो भी वर्क हुआ उससे वही जो है सिद्ध हुआ।
अब अर्टिका, हालांकि अर्टिका डाई का भी शाक वर्ग के रूप में, शाक के रूप में सेवन किया जाता है, लेकिन अब उसको किस रूप में लिया जाए, लेकिन वृक्षीय शाक से तो डियरजिरेडिनिया हेट्रोफिला ही लिया जाना चाहिए और इसको दूसरे रूप में लिया जाना चाहिए, ये हमें ऐसा लगता है। तो ये अब एक रेफरेंस और है कि रेफरेंस नहीं, ये जो इस ये तो कंक्लूड कर दिया मैंने। यहाँ सभी विद्वानों की सभा बैठी है और सबका अपना चिंतन है, सब लोग अच्छे हैं, सबका अपने अपने दृष्टिकोण से विचार होता है, विचार करते हैं। तो एक आमलकी के बारे में एक पर्याय आता है, तिस्य फला। तो बहुत मैंने विचार किया और कि वे तिस्य फला आमलकी को क्यों कहा गया है, क्योंकि अलग अलग ढंग से गुरुजी ने जरूर कहा, उस पर गुरुजी से बात भी होती थी, उन्होंने लिखा भी है कि 30 से 27 नक्षत्र होते हैं और 28वां नक्षत्र जो है तिस्य नक्षत्र को, तो तिस्य फला कहा, इसका मतलब तिस्य नक्षत्र से इसका कोई न कोई संबंध है आमलकी का। तो अब तिस्य नक्षत्र से संबंध है तो इसको थोड़ा और सभी विद्वान इस पर विचार करें कि आमलकी को तिस्य फला क्या कहा गया, क्यों कहा गया, और तिस्य नक्षत्र का क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो आमलकी से संबंधित है। ये थोड़ा इस पर सब लोग विचार करें। ये थोड़ा इस प्रकारांतर बात थी, क्योंकि यहाँ विद्वानों की सबकी सभा बैठी है, इसलिए मैंने ये चिंतन, परस्पर आदान प्रदान से ही हम लोग सीखते हैं, हम भी आज विद्यार्थी हैं, सब लोग सीखते हैं एक दूसरे के ज्ञान से। तो इन्हीं भावों के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक शुभवाद प्रस्तुत करता हूं और सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सादर नमस्कार और परिषद के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद सर सर। एक सर मैं मोहनलाल सर से एक था सर, ज्ञान के बात मैं पूछना चाहता था सर से, एकदम याद आई थी। एक जो ये कट सागौन करके पीलीभीत और आसपास के एरिया में पूरे तराई बेल्ट में मिलता है, जो हाँ हैप्लोफ्रैगमा डाइवेरिकेटा, वो जी जी भी वैसा ही सर वो होता है। मैं तो हाँ। पहले जब वो हैप्लोफ्रैगमा तो वो देखा है, लेकिन वो देखा नहीं था मैंने। तो कभी कभी उसी को मैं समझ बैठता था कि क्या यही तो नहीं है मेषशृंग जो है, डोलिकंड्रॉन। डोलिकंड्रॉन मैंने हाँ कम उसकी देखा है सर। बिल्कुल आपने सही कहा, जी सर। बिल्कुल उसकी तो भी जो फलियां होती है ना, वही जी मेष सर। श्रृंग लटकती है, लेकिन ध्यान से देखेंगे ना जी तो सर। ये जो हम लोगों का पूरा जो कोटा बेल्ट से शुरू होता है और पूरा मध्य प्रदेश से लगा हुआ बेल्ट है, इधर से हाँ अरावली सर। पर्वत और उधर से जो है वो वही महाराष्ट्र सर, की वो मेरा मेरा पर्वतमाला। ज्यादा देखा हुआ नहीं है ना सर वो। हाँ, तो वो मैं तो दोनों की पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, इधर जी अरावली की और उधर जो महाराष्ट्र में कोसी है पर्वत श्रृंखला, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, दोनों मिलती है, उधर तो उस पे ये उधर दोनों जहां का संगम होता। डोलिकंड्रॉन बहुत है आजकल हाँ, सर नदी। डॉलिकंड्रम जो है पूरा जी कोटा सर। से लेकर के रावत भाटा और पूरा वही, तो उसकी जरूर फलियां हमने देखा कि बिल्कुल मेष श्रृंगवत, जैसे जैसा अभी पवन बिल्कुल जी ने ठीक सर। पूरा चित्र से ही नहीं मेष सर, श्रृंग, बहुत अच्छा डिस्कशन किया है सर उन्होंने, हाँ बहुत हाँ अच्छा हाँ किया है। दिखाया, तो उससे ज्यादा सिमिलर मिलती है, तो इसलिए जी वो सर। नो डाउट वही है। लेकिन आपने जो कहा ना ये जो फिग्मा का तो, लेकिन जी इसकी सर, थोड़ी लंबी हैप्लोफ्राइमा। हाँ, हाँ हाँ इसकी सर, लंबी लंबी तो। होती है, हाँ उतना अच्छा सर। उसकी नहीं मिलती है, वो तो कट सागौन ही है जी दरअसल, सर। जी। जो जी सर। पाटला के जो है हाँ, वो उसको कोई लोग कहने लगते हैं सर। सब्स्टिट्यूट में दिया जाता है, और जी वो सर। शास्त्रोक्त द्रव्य नहीं है एक्चुअली, कहीं हाँ नहीं हमें, सर, वो बाद में आया है सर। हाँ पाटला के सब्स्टिट्यूट में प्रयोग करते हैं लोग, कहीं कहीं उसको घंटा पाटला भी बोलते हैं हाँ, इसीलिए। वो पीलीभीत बोल रहे थे लोग, मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये घंटा पाटला हाँ के नहीं नाम से नहीं, तो वो और ही है। बिल्कुल जी क्लियर है, सर, वो नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जी सर। धन्यवाद। हम लोग हाँ, ठीक। प्रणाम सर। थैंक यू नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और किसी को कुछ कहना है तो भट्ट सर थे, डॉक्टर विनायक भट्ट।
शायद नहीं है अभी। अनिल शुक्ला हरिशंकर सर मिश्रा जी, हरी मिश्रा जी, जी जी। है क्या सर? ओके ओके, मिश्रा सर प्लीज। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सभी सर। उपस्थित विद्वज्जनों को सादर नमस्कार। मैं इसलिए शांत था क्योंकि मैं ट्रांजिशन में हूँ और आज का प्रेजेंटेशन वास्तव में बहुत अच्छा था सर का, और बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन अभी तिवारी संघ सार हाँ, आवाज आपकी वही है, आप आ रहे हैं ना, वही तो यात्रा में आपकी आवाज टूट रही है। जायसवाल सर बोल चुके हैं, मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं सभी को पुनः शायद डिस्कनेक्ट हो गए सर। जी लगता है, तो हाँ समापन होना जी चाहिए। जी अनिल सर जी से बात। जी ठीक सर। है। हाँ, कट गया सब, नहीं कर। जी जी सर, आपका आवाज कट रहा है, डिस्टरबेंस काफी है। हाँ, आवाज कट रही है हाँ क्योंकि ट्रांजिशन में हूँ, हालांकि मैं रुक गया हूँ। जी जी तो सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आज का, और बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हुई। लेकिन किसी भी द्रव्य के निश्चयात्मक निर्धारण के लिए जब तक शास्त्रोक्त तो उसके गुण धर्मों का परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। और मोहनलाल जायसवाल को मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो, जी जी सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मुझे लगता है अभी हमने समापन करना चाहिए, तो शांति मंत्र के साथ हम सभी को धन्यवाद देते हुए सबसे पहले मैं सुरेंद्र चौधरी सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, मोहनलाल जायसवाल सर, अनिल शुक्ला सर, आर के तिवारी सर, गिरिधर सर, रश्मि मैडम, शिवानी मैडम, और बाकी सब लोग जो यहाँ ज्वाइन हुए हैं, हरिशंकर मिश्रा सर, और अपना इनपुट्स देने के लिए सभी को धन्यवाद। और शांति मंत्र के लिए सब तैयार हो जाइए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी विद्वजनों को नमस्कार, शुभ रात्रि एंड धन्यवाद। पवन संगू सर, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था, और इतने कम समय में आपने किया, इसलिए Thank थैंक you यू very वेरी much, मच। ma'am. Thank जी, you. अच्छा प्रेजेंटेशन में थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।